हेलो एवरीवन, मेरा नाम शहरियार मुख्तार है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से टीआरवी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। टीआरवी का मतलब होता है टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा। ये विजिटर वीज़े की एक फॉर्म होती है और ये हमें इसलिए रिक्वायर्ड होता है कि अगर हमने कनाडा से बाहर ट्रैवल करना है तो ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है। ये एक बेसिकली स्टैंप होती है जो आपके पासपोर्ट पर लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे स्टडी परमिट की लगती है। जब हम यहाँ पर आते हैं स्टडी परमिट पर हमारे पास स्टडी का वीज़ा होता है और वो स्टैंप हमारे पासपोर्ट पर भी होती है। तो जो स्टडी परमिट हमारे पास होता है, जो उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह होती है, सेम हमारे पास पासपोर्ट पर भी होती है। इसी तरह जब हमें हमारा वर्क परमिट मिलता है तो हम वर्क परमिट के बेस पर टीआरवी अप्लाई करते हैं और मेन पर्पस जो है वो सिर्फ इसलिए कि हम ट्रैवल कर सकें, क्योंकि हमारे स्टडी परमिट पर और वर्क परमिट पर एक लाइन लिखी होती है जिस पर ये लिखा होता है दिस इज़ नॉट अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो अगर आपकी स्टडीज़ ख़त्म हो गई हैं और आपने ट्रैवल करना है बैक इन कंट्री या कहीं पर भी और आपने वापस कनाडा आना है, अगर आपने वापस कनाडा आना है तो अगर आपके पास ये स्टैंप नहीं है तो आप लोग वापस नहीं आ सकते। अप्लाई करने का तरीका बहुत इजी है, ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है और विद इन 30 डेज़ में सारा काम हो जाता है। 15 डेज़ में क्या होता है कि आप लोगों का ऑनलाइन प्रोसेस जो है 15 डेज़ में आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। 15 डेज़ में आपकी पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आ जाती है। आफ्टर 15 डेज़ आप लोग पासपोर्ट सबमिट करवाते हैं और विद इन 15 दोज डेज़ आपका पासपोर्ट घर वापस आ जाता है। मैंने अपनी डेट्स लिखी हुई, मैं आप लोगों को अपनी डेट्स बताता हूँ। मैंने अप्लाई किया था 15 मार्च को ऑनलाइन और 31 मार्च को मेरा डिसीजन आ गया था जिसमें उन्होंने मुझसे पासपोर्ट की रिक्वेस्ट की थी। 31 मार्च को मुझे जब ये रिक्वेस्ट आई, 1 अप्रैल को मैंने अपना पासपोर्ट सबमिट करवा दिया और 18 अप्रैल को मुझे मेरा पासपोर्ट स्टैंप लगकर वापस मिल गया। ये मेरा पासपोर्ट मेरे पास है। मैं दिखा तो नहीं सकता आप लोगों को स्टैंप वगैरह, बस इतना बता देता हूँ कि ये स्टैंप बिल्कुल सेम वैसी ही होती है, बिल्कुल सेम वैसी ही होती है जैसी हमारी स्टडी परमिट की होती है, एग्जैक्टली सेम है। एक चीज़ जो मुझे नहीं पता थी वो ये थी कि ये स्टैंप जो है वो 10 साल की लगती है, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ विजिटर वीज़ा। विजिटर वीज़ा जो कनाडा का होता है वो 10 साल का होता है। तो बहुत इजी है प्रोसेस अप्लाई करने का। मेरा पासपोर्ट जो है वो 7 ईयर्स तक वैलिड था, इसलिए मुझे सिर्फ 7 ईयर्स का ये मिला है। आप लोग मेक श्योर कीजिएगा अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों के पास 10 साल जो हैं वो हों। अगर आपके पास 7 से कम होंगे तो आपको 7 से कम मिलेगा, क्योंकि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं जिनकी एक्सपायरी ज़्यादा होती है, कभी भी आपको पासपोर्ट की वैलिडिटी से ज़्यादा की वो चीज़ नहीं मिल सकती, फिर चाहे वो वर्क परमिट हो या विजिट वीज़ा। ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी। पासपोर्ट सबमिट किस तरह करवाते हैं? पासपोर्ट सबमिट करवाने के लिए आप लोग कनाडा पोस्ट जाते हैं। कनाडा पोस्ट जाकर आप लोग 2 इन्वेलप लेते हैं। मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा जिसमें सारा प्रोसीजर आईआरसीसी की साइट से मेंशन हुआ होगा। उसमें आप 2 रीजनल साइज़ के पास वो इन्वेलप्स लेते हैं। एक जो है वो साइज़ तो मुझे याद नहीं है, मैं यहाँ पर डायमेंशंस लिख दूंगा उनकी। 2 साइजेस के होते हैं, एक बड़ा इन्वेलप होता है, एक छोटा होता है। आपने छोटे में अपना पासपोर्ट डालना होता है और उस इन्वेलप में जिसमें आपने पासपोर्ट डाला है उस इन्वेलप को बड़े इन्वेलप में डाल देना होता है और दोनों पर अपना एड्रेस लिख देना होता है और साथ आपने वो डॉक्यूमेंट की कॉपी या प्रिंट आउट लगा देना होता है जिसमें उन्होंने आपकी पासपोर्ट की रिक्वेस्ट की हुई होती है। इतना सिंपल सा प्रोसीजर होता है और जब आप लोग अप्लाई वगैरह कर देते हैं और आपका पासपोर्ट जो है वो विद इन 14 to 15 वर्किंग डेज़ में आपका पासपोर्ट आपके पास आ जाता है। मेरे केस में 18 डेज़ इसलिए लगे कि यहाँ पर बीच में कुछ पब्लिक हॉलीडेज़ आ गई थी जिसकी वजह से मुझे ये थोड़ा सा 18 दिन लग गए हैं, जो कि ज़्यादा नहीं है। उन लोगों ने अपनी साइट पे मेंशन किया हुआ है कि उनको 14 डेज़ चाहिए वर्किंग डेज़ फॉर प्रोसेसिंग। ऑन द टॉप ऑफ दैट उनको चाहिए शिपिंग के लिए जो चीज़ जाती है और शिपिंग से जो आती है, मतलब ये दिन जो है ये एक्स्ट्रा होंगे। बहुत इजी प्रोसेस है। अभी मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ और वहाँ पर आपको सारे प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ। सर्च अप्लाई फॉर कनाडा ऑनलाइन, क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। You need to go all the way down. Over here you need to press apply online for a visa. Then you need to sign into your GCK account. And then all the way down press apply to come to Canada. Then you don't have a UCI or the reference number, so you need to press visitor visa, study and work permit. You need to answer a few questions. These are pretty basic questions. So first one will be work, because that's what you want to do in Canada. Then it will be temporary, more than 6 months, and the code on your passport, in my case it's PKR, so I will select that. And in my case it will be Canada. For your case it can vary. Then in my case, family member who is a Canadian citizen, no. Date of birth, I'm just selecting randomly over here. Then you need to press next. And I'm not a US citizenship, so no. Then I haven't applied for that, so it will be worker. Current immigration status.
Press next. So these are the questions. In my case, most of them are no, but you can read and you can select according to your situation. So first one is the jobs, the other one is the common law or the spouse. So in my case, these are no, and you can check your case. You need to press next. Then I haven't applied for PR or any permanent residency, so I will select no. Then no as well. I do have a written job offer, but I will select no because if I press yes, I need to prove that as well. And for this one, I will select no. You can see yours. Never married or single. Province or territory or destination. In my case, it's Canada, and the province will be Ontario. So that's where you can see temporary resident visa. So you will press continue. And now you will describe your situation. So I have a work permit. You will select the work permit, and because you have a work permit, then only you can apply for TRV. In the last 12 months, no. So work on one of the following job. In my case, it's no. Family member, no. I'm doing by myself, for myself. That's why. No, I'm not giving access to anybody. Study permit, so I have to press yes. So we have to pay fee for that. So I will say yes, I will be paying back my application fee. Digital copy of the documents, yes. Yes, we are doing it online and we will be paying by debit or MasterCard. So I'll press yes. So these are all the options which I selected. So you can review, and if you want to make any change, you can just press the pencil right beside it, and then you can make changes according to your case. And then these are all the specifications and all the recommendations for the different formats. You can see and you can read it out. Then you need to press continue. Then these are the documents which are the required. Some of them are compulsory and the other ones are the supporting or the optional ones. So the supporting documents and optional documents, I haven't uploaded anything on the optional one, and the fee is $100. So you need to press on IMM 5257 form, and this is the form I filled for myself. I have made some changes in this one, so it will be similar to your case. So name, UCI number, a visitor visa, given name, last name. Then you need to select your gender, date of birth, place of birth, country, citizenship, Canada, country, status will be worker. So there are multiple options, but you need to select worker. And over here in the date, you need to press from and to, which is the date on your work permit. And then your marital status, then law relationship. In my case, it was no, so I selected no. Then your native language. Then if you press yes, you need to select all those options as well, but in my case, it was no. Then language, then the passport number, then the country, issue date of the passport and the expiry date of the passport, then national identity number, expiry and the issue date and the country of issue. In my case, it was Pakistan, so I selected that. Then you will write down your mailing address, province, postal code, then telephone number. In my case, it was Canada. I wrote down my number, then your email address. So then you need to write down purpose of my visit. That's important. You need to select returning worker in this case. Then indicate how long you plan to stay. So over here you need to select from and to, the same date you wrote down top at the top, and this is the date from and to which you have on your work permit.
So when you write down from and to, you might get an error. So you need to select from as a today's date, the date you are applying, and the to will be same as on your work permit. Funds, in my case I wrote down 10,000. You can write down as much as you want. Then the employer name, relationship, employer address. If you have any past, you can write down that as well. Then your education, from and to, your field, city, country, school name, then your employment record. If you have any past, you can add that as well. In my case I only have 2. If you have more, you can write down that as well. In my case, all A, B, and some of them were no. This was yes, so that's what I wrote down. You can select your years as well. In my case it was no, 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 and then at the end I selected yes. You can even select no. Then you need to sign and the date on which you are applying, and then you need to validate. It will generate a QR code and then you need to submit it. Okay, on this one you need to upload Canadian work permit. Then you need to select the employment record, digital photo. In my case, I haven't uploaded anything in the employment record, just because I already have my TRV. That's the only reason it is showing employment record. In your case, it won't ask employment record, and you don't need to upload anything. Then you need to pay $100 fee, and then you need to submit that. That's all. सारा कुछ। अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आए ऑनलाइन में या जो मैंने सारी बातें बताई हैं उसमें, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। देन मैं बता दूंगा कि मतलब उसको किस तरह सॉर्ट आउट करना है जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। I guess that's everything. If you want me to make any other video on any other topic, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक रही बात वर्क परमिट की, वो भी मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, और सिन भी मैंने अपना ऑनलाइन ही अप्लाई किया था, और मुझे वर्क परमिट भी मिल गया हुआ है, सिन भी मिल गया हुआ है। मैं उस पर भी वीडियोस बनाऊंगा कि उसको किस तरह अप्लाई करते हैं और क्या प्रोसीजर और क्या सारा कुछ होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। एंड आई गेस दैट्स ऑल। थैंक यू।